Next topic we are going to start is isomerism in coordination compounds. Isomerism in coordination compounds. So we are having two categories of isomerism. पहला पॉइंट तो ये बेटा, isomerism can be defined as same molecular formula but different structural or spatial formulas. In general, we have isomerism, same molecular formula but different structural or spatial formulas. Isomerism can be of two types. So now we have isomerism in coordination compounds. It can be of two types. One is called structural isomerism. One is structural isomerism. And second is called, we can say, stereoisomerism. Stereoisomerism. Structural isomerism can be of subtypes. First we have ionization isomerism. First is ionization isomerism. Second here is hydration isomerism. Hydration isomerism. Third is linkage isomerism. Linkage isomerism. Fourth is coordination position isomerism. Fifth is coordination isomerism. And last is polymerization isomerism. So we have structural isomerism of 6 types: ionization, hydration, linkage, coordination position, coordination, and polymerization. Stereoisomerism can be of 2 types only. One is called geometrical isomerism. One is geometrical isomerism. And second is called optical isomerism. So this is the classification of isomerism of coordination compounds. Hydration isomerism can also be named as solvate isomerism. Hydration isomerism can also be named as solvate isomerism.
Note it down. First heading, let's start with ionization isomerism. First of all, we'll start with ionization isomerism. This type of isomerism, ionization isomerism start कर रहे हैं. तो we have पहले define कर लेते हैं, write down the definition. This type of isomerism arises, this type of isomerism arises when an ion outside the square bracket, when an ion outside the square bracket can displace a ligand, from the complex and become a part of complex itself. Displace a ligand from the complex and becomes a part of the complex itself. Now we have ionization isomerism. What does it mean? Second point देखो. Ionization isomerism can be identified. Ionization isomerism can be identified from the type of ions produced by the complex, from the type of ion produced by the complex in a solution. For example, let's study the complex cobalt, pentamine, sulfate, bromide. If this is a complex, and another complex is cobalt, pentamine, bromide is inside the bracket, and then sulfate is outside. तो बेटा इन दोनों फॉर्मूलाज में कोबाल्ट एक बार, 5 बार अमोनिया, 1 बार ब्रोमीन और 1 बार सल्फेट है. यानी दोनों का फॉर्मूला बिल्कुल सेम ही था. लेकिन जब इससे आयंस प्रोड्यूस हुए तो इससे मिला हमें ब्रोमाइड आयन. वी गेट ब्रोमाइड प्लस कोबाल्ट NH3 sulfate, and it's a square bracket of 1 positive charge. So we get bromide ion is produced, and this bromide ion when reacted with silver nitrate, so we get formation of AgBr, yellow precipitate. But this second complex is producing a sulfate ion plus cobalt, 5 ammonia, bromide, and now it is 2 positive because sulfate is 2 negative, the bracket is 2 positive. Now this sulfate can react with barium chloride
to give us barium sulfate, that is a white precipitate. It means both the complexes are producing different ions in solution. Both complexes are producing different ions in the solution. So we can see isomerism is ionization. अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि किस लिगेंड को किससे एक्सचेंज कर सकते हैं. हमने किया क्या बेटा, हमने इस ब्रोमाइड को, जिसको हम बोलते हैं काउंटर आयन मीन्स वो आयन जो ब्रैकेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए लगाया गया है. दिस काउंटर आयन इज डिस्प्लेसिंग सल्फेट. तो बेटा एक नेगेटिव लिगेंड, नेगेटिव आयन नेगेटिव लिगेंड को डिस्प्लेस कर सकता था. ये नेगेटिव है, नेगेटिव से डिस्प्लेसमेंट ले सकता था. नेगेटिव न्यूट्रल को डिस्प्लेस नहीं कर सकता. इसका मतलब आप अमोनिया को बाहर नहीं लिखोगे. यू कैन जस्ट चेंज द पोजिशन ऑफ ब्रोमाइड एंड सल्फेट. Another example we can have is, let us suppose we have nickel, 5 water chloride and outside is bromide. So can you make another complex ionization isomer of this? Can you make ionization isomer of this? क्या करेंगे? Yes, bromide should be inside, chloride should be outside. So we can take it nickel, water 5, here it is Br and Cl. ये बन जाएगा. अब क्वेश्चन अराइजेस कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म. हम किसी कॉम्प्लेक्स को देख के कैसे गेस करेंगे कि इसमें आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म होगा या नहीं होगा. तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म इज पॉसिबल व्हेन आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म इज पॉसिबल. फर्स्ट पॉइंट, फॉर केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस. पहला पॉइंट तो है कि ये सिर्फ केटाइनिक कॉम्प्लेक्सेस में ही हो सकते हैं. ठीक है. और नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है एनाइनिक लिगेंड मस्ट बी देयर इन द कॉम्प्लेक्स. एनाइनिक लिगेंड मस्ट बी देयर इन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि आपने जिसको डिस्प्लेस करना है वो नेगेटिव है. नेगेटिव होगा तो नेगेटिव को डिस्प्लेस कर पाएंगे. तो दो चीजें हमें ध्यान रखनी है. वन शुड बी कि एक तो नेगेटिव लिगेंड्स होने चाहिए. अगर सारे न्यूट्रल लिगेंड्स हो तो आयोनाइजेशन आइसोमरिज्म नहीं हो सकता. और दूसरी बात है कॉम्प्लेक्स मस्ट बी पॉजिटिवली चार्ज, यानी स्क्वायर ब्रैकेट के पीछे कुछ लिखा होना चाहिए, तभी हम इसको अंदर और बाहर की तरफ एक्सचेंज कर सकते हैं. That's all about your ionization isomerism. First topic we are finished with. Got it? समझ आ गया सबको? Okay, बेटा second category, second is hydration or solvate isomerism. Second isomerism, hydration or solvate isomerism. हाँ जी बेटा. हाँ, काउंटर आयन तो दोनों तरह के हो सकते हैं. राइट ऑन. हाइड्रेशन आइसोमरिज्म इज पॉसिबल when water is involved as a solvent. Water is involved as a solvent as well as a ligand. As a solvent as well as a ligand. यानी इस आइसोमरिज्म में सबसे पहले हम देखेंगे वहां वाटर प्रेजेंट होना चाहिए लिगेंड की फॉर्म में, यानी इट मस्ट बी एक्वा कॉम्प्लेक्सेस, इसमें पानी होना चाहिए. राइट. सेकेंड पार्ट, इट कैन बी डिफाइंड एज
The two isomers differ. The two isomers differ due to number of water molecules directly bonded to the metal or due to number of water molecules directly bonded to the metal or present as free solvent molecules as hydration water molecules. Present as free solvent molecules as water of hydration. Hydration, water of hydration as a water of hydration, right? अब हमारे पास कंडीशन ये थी कि वहां पे वाटर होना चाहिए. हमें अगर वाटर मॉलिक्यूल्स दिखेंगे तो हम कहेंगे इसमें कौन सा आइसोमरिज्म हो सकता है. वी कैन से इट इज हाइड्रेशन आइसोमरिज्म इज पॉसिबल. और सॉल्वेंट क्या होना चाहिए? इट मस्ट बी वाटर. फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज कोबाल्ट, हेक्सा aqua, right, and Cl3. Now 6 water molecule, 3 chlorine. अगर हम इसको ऐसे लिखें, कोबाल्ट 5 water molecules, 1 chlorine is inside, 2 chlorine outside, dot 1 water molecule. Still water are 6, 3 chlorine, water 6, cobalt 1. इसमें 1 water of hydration. This is having 1 water of hydration. And here there is no water of hydration. No water of hydration. We can have cobalt, 4 water molecules, 2 chlorine inside, 1 chlorine outside, and 2 H2O. So now we have 2 water molecules of hydration. 2 water of hydration. तो अब हम ये कह सकते हैं कि these 3 are hydration isomers of each other. No water of hydration, 1 water of hydration, 2 water of hydration. तो these are hydration isomers. यहाँ पे 6 वाटर लिगेंड है, 5 वाटर लिगेंड है, 4 वाटर लिगेंड. तो हाइड्रेशन का डिफरेंस पड़ रहा था, इस चीज का नाम रखा हाइड्रेशन आइसोमर्स. ठीक है. सिमिलर टू आयोनाइजेशन, आयोनाइजेशन से मिलता जुलता है. यहाँ पे भी हम एक क्लोरीन अंदर ले जा रहे हैं एंड सो ऑन. लेकिन ये सेम क्लोरीन ही अंदर जा रहा है, तो दीज आर नॉट आयोनाइजेशन आइसोमर्स. आयोनाइजेशन आइसोमर्स में नंबर ऑफ टाइप ऑफ आइंस फॉर्म्ड आर डिफरेंट. यहाँ पे आइंस क्या बनेंगे? 2 क्लोराइड, 3 क्लोराइड एंड 1 क्लोराइड. क्लोराइड ही बनेगा. इसका मतलब नो आयोनाइजेशन, इट इज जस्ट अ हाइड्रेशन आइसोमरिज्म. राइट. तो क्या देखना है हमें? जिस कॉम्प्लेक्स में वाटर प्रेजेंट हो वो क्या शो कर सकता है? हाइड्रेशन आइसोमरिज्म. लेकिन किस सॉल्वेंट के अंदर? वाटर के अंदर. ठीक है. दैट्स अबाउट हाइड्रेशन आइसोमरिज्म. हाँ जी बेटा. नहीं, आइसोमरिज्म में ब्रैकेट तोड़ नहीं रहे बेटा. आइसोमरिज्म में सिर्फ ये कहा गया कि अगर एक ही फॉर्मूला के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आपको बनाने को दिए जाते तो हो सकता है ना, एक वन स्टूडेंट कैन फॉर्म दिस फॉर्मूला, सेकेंड कैन फॉर्म दिस फॉर्मूला, थर्ड कैन फॉर्म दिस फॉर्मूला. तो सेम फॉर्मूला एंड डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर पॉसिबल. हम एक कॉम्प्लेक्स से दूसरा कॉम्प्लेक्स नहीं बनाएंगे, वो तो बन ही नहीं सकता. ठीक है. ये तो अलग अलग कंपाउंड्स हैं जो एक ही जैसे दिख रहे हैं. फॉर्मूला उन सबका सेम है लेकिन स्ट्रक्चर्स इन सबके डिफरेंट है. ठीक है. आइसोमरिज्म में याद रखना है सिर्फ एक ही आइसोमरिज्म है जो एक दूसरे से बन जाता है, वो टॉटोमरिज्म है. अदरवाइज तो आपको पता है कि इट्स नॉट पॉसिबल टू हैव इंटरचेंज. थर्ड आइसोमरिज्म करेंगे इसके बाद, लिंकेज आइसोमरिज्म.
समझ आ गया ना हाइड्रेशन. थर्ड इज लिंकेज आइसोमरिज्म. Next we have linkage isomerism. देखो जी, this isomerism is possible. This isomerism is possible only when ambidentate ligands are present in the complex. Only when ambidentate ligands are present in the complex. Clear? Clear? Ambidentate ligands are present. It means अब हमें कॉम्प्लेक्स में ये देखना पड़ेगा. There should be NC or CN written, SCN or NCS. There should be NO2 or ONO negative. If these ligands are present, only then we can have linkage isomerism. अगर आपको कॉम्प्लेक्स में ये ligands दिखेंगे तो आप कह सकते हो कि लिंकेज आइसोमेरिज्म हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता. ठीक है जी. The two isomers differ. The two isomers differ due to the linkage site of ambidentate ligand. Due to linkage site of ambidentate ligand to the metal. For example, if one complex is cobalt pentaamine NO2 and Cl2, so this is red colored complex. This is having red color. Same is possible cobalt pentaamine and now it is NO2 and Cl2. Now this complex is yellow in color. It means these two are different just because of ONO and NO2. The linkage site is different. Linkage site is different. Therefore, the isomerism is called linkage isomerism. This is one of the important example. Another example we can have is if it is cobalt 4 ammonia CN twice and 1 Cl.
Cn can be written as Nc, तो हम कहेंगे it can be written as Nc twice. One possibility. Another possibility is Cn and Nc. यानी आपके पास दोनों Cn हो सकते हैं, दोनों Nc बन सकते हैं. ये भी तो हो सकता है कि एक Cn ही रह जाए और एक Nc बन जाए. तो अब हम कहेंगे इसमें पॉसिबिलिटीज ये हैं कि वी कैन हैव Cn ट्वाइस, इट कैन बी Nc ट्वाइस, और इट कैन बी Cn और Nc, बोथ आर देयर. तो वी कैन मेक कॉम्प्लेक्सेस लाइक, अब हम कह सकते हैं, अगर मैं इनके फॉर्मूलाज बना के बताऊं तो आई से कोबाल्ट टेट्राएमीन Cn dot Nc Cl. Another is cobalt pentaamine, so tetraamine Nc twice. It means number of isomers will increase if ambidentate ligands will increase. अगर ambidentate ligands बढ़ते जाएंगे तो number of isomers भी बढ़ जाएंगे because of the chances to get various combinations. है ना, अगर 3 Cn होते तो क्या करते, तीनों Cn हो सकते थे, तीनों Nc बन सकते थे, 2 Cn 1 Nc, 2 Nc 1 Cn, तो probabilities और बढ़ जाती. राइट, दिस इज अबाउट योर लिंकेज आइसोमेरिज्म. Next is coordination position isomerism. Next isomerism is coordination position isomerism. समझ आ रहा है बेटा सबको? गुड. हाँ जी बच्चे, फर्क ये बेटा, Cn में कार्बन इज फॉर्मिंग द बॉन्ड और Nc में नाइट्रोजन इज बॉन्डिंग विद द मेटल. इट्स लाइक मेटल, अगर C और N में कोऑर्डिनेट बनाया, another is metal and now it is N and C is coordinating, तो ये साइनाइड्स वाला कंपाउंड बन जाएगा या आइसोसाइनाइड. तो प्रॉपर्टीज में बहुत फर्क है, therefore we can say there is difference. नहीं, पहले और बाद में तो फर्क नहीं पड़ेगा ना. कॉम्प्लेक्स में पहले और बाद में अगर फर्क डालोगे तो वो चला जाएगा ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में. पोजीशन चेंज करना चाह रहे हो ना, तो जब आप पोजीशन चेंज करके आइसोमर्स बनाते हो तो वो ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल में बन जाता है. अभी तो फिर ये है कि आपकी मर्जी है, आप Cn और Nc को जैसे मर्जी लिख सकते हो. हमारा तो सिर्फ ये कंसेप्ट है कि कोबाल्ट के साथ 6 लिगेंड्स आपने अटैच करने हैं, 4 वो हैं और 2 ये. ठीक है. नाउ वी हैव कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म. दिस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली इन ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस. तो नेक्स्ट देखो, कोऑर्डिनेशन पोजीशन आइसोमेरिज्म. दिस आइसोमेरिज्म इज पॉसिबल ओनली इन ब्रिज्ड कॉम्प्लेक्सेस. For example, if you have a bridged complex, that is with 2 bridged ligands I have drawn, हमारे पास इस complex में position of ligands. Is it clear? Metal, 2 chlorine